friends, in today's session we will start with a fresh chapter that is called S block element. So first of all, what actually means by S block element? So last electron introduced into this S subshell is known as S block element. In our periodic table, group number 1 and group number 2 are entitled as S block element. So in this chapter we have to discuss two groups, that is group number 1 and group number 2 in detail. So the element in which the last electron enter in the outermost shell of S orbital are called S block element. They are included elements of group 1 and group 2. Now let's introduce the family member. Which are the family member present in the group 1 and which are the group 2? So in group 1, which are the element? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Just because of radioactive nature, we are not discuss francium in detail. Means जब भी हम physical properties, chemical properties के बारे में discussion करेंगे, we end with cesium, we start with lithium. We never introduce francium just because of radioactive nature. They are collectively called alkali metal because they dissolved in water to form a strong alkalis. So one marker question, why group number 1 are entered as alkali metal? Just because the alkali metal are dissolved in water and converted to strong alkalis. Group number 2, which are the family member? Means कौन-कौन से element present है group 2 के अंदर? Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Once again, just because of radioactive behavior, we are not introduced radium. जब भी ग्रुप 2 का डिस्कशन करेंगे, ग्रुप 2 स्टार्ट विद द बेरिलियम एंड विथ बेरियम. Just because radioactive nature, we are not discussing radium. They are collectively called alkaline earth metal except beryllium because their oxides and hydroxide are found in the earth crust in alkaline nature. So that's why they are entitled as alkaline earth metal. तो वन मार्कर क्वेश्चन कंबाइन करके पूछ सकते हैं, why group number 1 known as alkali metal and why group 2 known as alkaline earth metal. The general electronic configuration of S block element is noble gas NS1 for group number 1 means alkali metal and noble gas NS2 for alkaline earth metal. So this is a table for group 1 just because हम immediately start कर रहे group 1. जब ग्रुप 2 करेंगे तब उसके एलिमेंट और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे. सबसे पहले कौन कौन से फैमिली मेंबर है देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दैट इज Li, Na, K, Rb, Cs and Fr. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप देखिए, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. So basically it's always a noble gas NS1 electronic configuration. So group number 1 family member की general electronic configuration क्या हो जाएगी? Noble gas NS1. So without wasting much time, this is a general introduction to this S block element. So let's start first group 1 elements. So let's start with the group 1. Group 1 का first point क्या है? Group 1 के लिए electronic configuration देखना है. So electronic configuration just we discussed, it is noble gas NS1. All the alkali metal have one valence shell electron, that is NS1, outside the noble core. The loosely held S electron in the outermost valence shell of this element makes the most electropositive metal. Means this each and every element are always ready to release one electron. And due to this, they are most electropositive elements or metals. They readily lose electron to give monovalent ions, that is M raised to +1. So यहाँ से आपको एक और चीज पता चल गई, just because they releases one electron, they converted into monovalent cation, means their oxidation number is +1. Hence they are never found in a free state in nature. Most important thing, alkali metal does not found freely in nature. Why? Just because of this reason.
The loosely held s electron in outermost shell of element makes them most electropositive metal, and they are ready to lose one electron and convert into monovalent cation. Hence they never found free state in nature. So point number 1 था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हो जाएगी? नोबल गैस that is in core and S1. That is the first point, group number 1, electronic configuration. Next point, atomic and ionic radius and ionization enthalpy. Atomic radius and ionic radius. So atomic radius and ionic radius chapter number 3 के अंदर भी बहुत इन डिटेल पढ़ा हुआ है. सिंपल सी बात है, in periodic table when you come up to the down, atomic number increases, molar mass increases, and due to this size increases, and due to this reason atomic and ionic radius is also increases. मीन सिंपल सी बात है, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबीडियम एंड रुबीडियम से सीजियम की तरफ जाते जाओगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, मोलर मास इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, एंड ड्यू टू दिस atomic and ionic radius is also increases. So the alkali metal atom have the largest size in the particular period in the periodic table. With increase in atomic number, atom becomes larger. The monovalent M plus are smaller than the parent one. All the cation having a smaller size to this corresponding cation. याद रहा, parent atom से cation की size छोटी होगी. And the atomic and ionic radius of the alkali metal increases on moving down to the group. Underline करके रखिएगा, atomic and ionic radii of alkali increases moving down to the group. मैं इस पूरे पैराग्राफ का one shot one line conclusion, that is they increase in a size while going to lithium to cesium. Last line 2 लाइन आप underline कर लीजिएगा, पूरा पैराग्राफ का कंक्लूजन यहाँ पे है. लिथियम से सीजियम की तरफ जाओगे साइज बढ़ेगा. Now ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? Minimum energy required to remove one electron in outermost shell is known as ionization enthalpy. Once again, minimum energy required to remove one electron in outermost shell is known as ionization enthalpy. अब हमारा फेवरेट फिगर, when if you want to remove one electron from lithium or rather than sodium, if you want to remove one electron from cesium, कहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा? सीजियम में से. सर क्यों ऐसा हुआ? Just because cesium is far away from the nucleus and sodium is really very close to the nucleus. Just because sodium is close to the nucleus, force of attraction to the nucleus is really very high, while in case of cesium, force of attraction with nucleus is really very less, and due to this, cesium can easily remove one electron from outermost shell. So this is all about your ionization enthalpy. The ionization enthalpy of alkali metals are considerably low and decrease down to the group. सर ये लो क्यों है considerably? Just because all the elements are always ready to remove one electron. They are always ready to remove electron. Why? Just because by removing one electron, they achieve nearest noble gas configuration. So that's why group number 1 having really very less ionization enthalpy. This is because the effect of increasing the size in outer weight and the increase in the nuclear charge, and the outermost electron is very well screened from the nuclear charge. So lithium से सीजियम की तरफ चले जाओगे, ionization enthalpy कम होती जाएगी. So this is all about your third point. Next we moved on to this fourth point. Fourth point है hydration enthalpy. सर ये hydration enthalpy क्या होता है? Hydration enthalpy is all about reaction with water. Each and every element when react with water, तब जो energy चाहिए, that is called as hydration enthalpy. The hydration enthalpy of alkali metal ions decreases with increase in ionic size. So the highest hydration enthalpy किसकी होगी? Lithium की. Why? Because lithium is smaller in size, then potassium, then rubidium, then cesium.
Lithium has maximum degree of hydration, and for this reason lithium salts are mostly hydrated, like LiCl.2H2O. Most important one marker question. Hydration enthalpy down to the group decreases. Lithium has highest hydration enthalpy just because of smaller in size, and due to this lithium salts are hydrated in nature. Next is flame coloration, a unique behavior of group 1 element. Each and every group 1 element gives you the characteristics flame when you burn on Bunsen burner. केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे तब प्रैक्टिकल के अंदर आपको पता चलेगा दिस विल गिव्स यू द वेरी ब्यूटीफुल फ्लेम. The alkali metals and their salt give a very characteristics to non-luminous flame. This is because the heat from the flame excites the outermost electron to the higher energy level. When electron come back to the ground state, they emit the radiation in visible range. ये सारा का सारा कंसेप्ट याद हो तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर हमने पढ़ा था. अगर आप भूल चुके हो तो लेट्स डिस्कस हाउ दिस लास्ट 2 लाइन का जस्टिफिकेशंस क्या बता रहा है. बेसिकली इलेक्ट्रॉन आर इन ग्राउंड स्टेट व्हेन यू हिट इट और व्हेन यू इरेडिएट इट. जब भी आउटर मोस्ट शेल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जनरली ग्राउंड स्टेट में होता है, व्हेन यू हिट इट or irradiated, they acquire some amount of energy and goes to the ground level stage to the excited level stage. Now excited level stage is highly unstable, come back to the ground state by releasing delta E energy, and this delta E energy gives you the color. Means in chemistry laboratory this is your Bunsen burner, this is your oxidizing flame, blue color flame. ये प्लेटिनम वायर होता है. प्लेटिनम वायर के आगे आपको एक सिंपल सा लूप बनाना है, लूप के ऊपर आपको कंपोनेंट रख देना है. व्हेन यू गो टू द स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तब प्रैक्टिकल के अंदर ये चीज आपको सिखाई जाएगी. दिस इज एंटाइटल्ड एज अ सॉल्ट एनालिसिस. सॉल्ट एनालिसिस के अंदर कैटायन की फ्लेम चेक करनी होती है. दिस इज कॉल्ड फ्लेम टेस्ट. सो व्हेन यू पुट दिस लूप कंटेनिंग सॉल्ट ऑन अ बुंशन बर्नर, जैसे ही फ्लेम को टच करोगे यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट कलर की फ्लेम दिखाई देगी. इनिशियली बुंशन बर्नर की क्या होगा फ्लेम ब्लू कलर का, जस्ट बिकॉज इट्स ऑक्सीडाइजिंग. तो ये सिंपल नॉर्मल सा बर्नर है. बर्नर के ऊपर जैसे ही आप ये लुक बना के कंपोनेंट यहाँ पे टच करोगे यू गेट द कलर. तो ये कलर किसकी वजह से आया, तो यहाँ पे हमने सीखा व्हेन इलेक्ट्रॉन आर इन अ ग्राउंड स्टेट, व्हेन यू हिट इट और इरेडिएटेड इट, they acquire some amount of energy and goes to the excited state. Now excited state is highly unstable stage, come back to the ground state by releasing delta E energy, and this delta E energy gives you the color. अब फिर से वो 2 लाइन फिर से पढ़ते हैं, शायद आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. This is because the heat from the flame excites the outermost orbital electron to the higher energy level. When this electron come back to the ground state level, they emit the radiation in visible range. अब सारे के सारे मेटल की आपको फ्लेम याद रखनी है. ये एमसीक्यू में भी बहुत काम आएगा, 1 मार्कर क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकल में तो काम आएगा ही आएगा. तो प्रैक्टिकल के पर्पस के तौर पे भी आप याद कर लीजिए, थियरी के पर्पस पे भी याद कर लीजिए. लिथियम गिव्स क्रिम्सन रेड, सोडियम गिव्स गोल्डन येलो, potassium gives violet, rubidium gives red violet, and cesium gives you the blue color flame. So alkali metal can detect by the flame test this element when irradiated with light. The light energy absorbed may be sufficient to make this atom to lose an electron. Most important 1 marker question. The property makes cesium and potassium useful as an electrode in photoelectric cell. याद कीजिए आइंस्टाइन वाला एक्सपेरिमेंट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. उसके अंदर जो मेटल था, मेटल कौन सा था, मैंने बोला था पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. व्हाई? जस्ट बिकॉज वहां पे भी क्या था, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस ऑफ द मेटल, मेटल इजैक्यूलेट 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं हम
This element, when irradiated with light, the light energy absorbed may be the sufficient to make an atom lose one electron. This property makes cesium and potassium useful as an electrode in photoelectric cell. Which metal are used in photoelectric cell? Generally cesium and potassium. And सारे के सारे metal की flame test याद करनी पड़ेगी. So this is all about your first session. चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है, एंड यू गेट मोस्ट प्रोबेबली 6 to 7 मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशन वेटेज. तो 6 मार्क के लिए बहुत ही इजी चैप्टर हो जाएगा एंड कंटिन्यूसली करते जाइएगा. विद इन 3 or 4 सेशन विल लर्न दिस एस ब्लॉक एलिमेंट. सो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट. तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट सेशन. We'll move on to the second session very soon. Thank you so much.